they should say, they in their mind should say, am I doing this right? Yes or Yeah. no? So everything what you do, It's you should conscious. ask yourself, am I doing the right thing? Yeah. So that's very important point from Vishal. ये डिजिटल सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी है ना, इसको आप फिजिकल सिक्योरिटी इन दोनों को आप अलग नहीं कर सकते. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. आज मैं और विशाल एक नए पॉडकास्ट के साथ आपके सामने हाजिर हैं. तो अस्सलाम वालेकुम कर दें विशाल आप. Assalamu alaikum equals hello. ओके तो जैसा कि हमारे इस चैनल का भी हम ज़्यादा फोकस किया हमने प्राइवेसी सिक्योरिटी पे, और सिक्योरिटी जो है ये साइबर सिक्योरिटी के साथ साथ फिजिकल सिक्योरिटी की तरफ भी हम डिस्कशन जो है वो करेंगे. और जैसे मैंने लास्ट में कहा था कि हम बेसिक चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, तो आहिस्ता हम एडवांस की तरफ भी जाएंगे. तो आज हम एक रियल टॉपिक जो है जो हर जगह आप कह सकते हैं कि उसके इंसिडेंट्स मिलते हैं. इसी तरह पाकिस्तान में भी रिसेंटली जो है वो कुछ इंसिडेंट्स हुए कि जहाँ पे जो है वो कुछ बच्चियाँ गेम्स खेलती हैं, तो उसके ऊपर जो है वो चैट की ऑप्शन होती है, फिर उसमें कुछ स्ट्रेंजर्स लोग भी होते हैं, एंड देन यू स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर. तो ये एक शुरू में तो आप एक फन के लिए करते हैं, लेकिन यू नेवर नो कि जिस स्ट्रेंजर से आप बात कर रहे हैं वो कितना महारत रखता है आपको ट्रिक करने में. तो बच्चे खास तौर पे जो छोटी उम्र के हैं या टीन एज में हैं, तो दे गॉट ट्रिक वेरी इजीली. फिर उसकी वजह से ये है कि वो किसी भी तरह जो है वो गलत ट्रैक पे जो है वो आ सकते हैं. जिस तरह से पाकिस्तान में हुआ कि डिफरेंट जो लड़कियां थी कराची से, तो दे गॉट मैरिड इन सो अर्ली एज कि जिस एज में जो है वो बच्चे का फोकस स्टडी की तरफ होना चाहिए, कोई कैरियर बिल्डिंग की तरफ होना चाहिए. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं वो ट्रिगर हुए कि आप शायद जो है वो उन बच्चों को भी डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उस एज में आपको अच्छे बुरे की कोई इतनी तमीज़ नहीं होती. तो इसका मतलब ये है कि वी नीड टू हैव सच एनवायरनमेंट कि जहाँ पे आप बच्चों को मॉनिटर कर रहे हो, इस एज के बच्चों को, कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो जो बाद में आपके लिए बदनामी या आपके लिए जो है एक लॉस का रीज़न बने. तो इशाल हमारे साथ हैं, हम इशाल से भी पूछेंगे कि इशाल इसके बारे में क्या समझती है, क्योंकि स्टोरी मैंने आपको बता दी इशाल कि कुछ लड़कियां जो हैं वो गेम्स खेलती थी, कुछ लड़के भी खेलते थे, बट दोज गर्ल इन स्मॉल एज. तो फिर ये है कि उन्होंने उनको ट्रिक किया. तो यू नो व्हाट बैड थिंग हैपेंड कि वो जो लड़के स्ट्रेंजर्स थे उन्होंने जो है ना उनको कहा कि भाई तुम अपना घर छोड़ दो, योर पेरेंट्स आर नॉट गुड, सो दे गॉट ट्रिक समहाउ. और फिर वो सब लड़कियां जो है ना अपना अपना घर छोड़ के जो है वो उस लड़के की तरफ चले गई. सो दैट वाज सो बैड. एंड इनिशियली देयर पेरेंट्स थॉट दे समवन हैज किडनैप्ड देयर किड्स, देयर डॉटर्स, बट लेटर ऑन पुलिस डिस्कवर्ड कि जो इस तरह से जो है ना किसी ने स्ट्रेंजर्स ने उनको ट्रिक किया था, तो वो उनके घर जो चली गई थी. तो आप बताएं इशाल कि आपके ख्याल में ऐसा क्यों हुआ. तो चैट जो है वो स्ट्रेंजर्स से तो नहीं करनी चाहिए. तो आप बताएं जो हमारे व्यूअर्स हैं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट. When you play on your own game, you're already like playing, you know, stuff. Why do you gotta chat? I mean, what's the use? Like if you you can play, and don't play those games where you have those like chatting stuff. Like you have to chat, and don't play those kind of games because if your parents say no chatting, then it'll kind of be boring just watching everybody chat to each other and that. Yeah. And why do you even gotta listen to other people's chat? Sometimes they say bad words. Sometimes little kids can be tricked by the bad words, and they could always say it, and they say it's like a good word, and they learn it more and more. Yeah. So the problem ये है शाल के जैसे आपके बाबा तो साइबर सिक्योरिटी में है ना, तो आई नो कि ऑल दीज थिंग्स, बट इन पाकिस्तान, इन अदर कंट्रीज, दे आर सिंपल पेरेंट्स हु हैव नॉट मच नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइबर सिक्योरिटी. तो फिर उनको पता नहीं चलता ना कि उनके बच्चे जो है वो क्या कर रहे हैं. तो इसी वजह से जो है ना उनको भी नहीं पता था कि उनके बच्चे जो है वो कोई चैट की ऑप्शन होती है. तो इसलिए जो है ना ऑल बैड थिंग्स हैपन इन पाकिस्तान स्पेशली. Yeah.
तो फिर पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? So they should always be cautious with their child, because they could like have to look out for your child, because if they don't look out for a child, the same thing could happen. Like you're not like pretend you're just like walking with your family, and then you try to walk away, and your parents don't even see you, so they just will let go accidentally, and then you get lost. Yeah. So you gotta look very cautiously, even though if you don't watch this video. Right. So Because children can be very hard to train as they get older and older. True. As So they get older, so parents have to spend so much as time. they get older and older, they don't have to spend that. तो इसकी क्या रीजन है शाल? जैसे ओके, इसकी क्या रीजन है? लाइक सी मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स होते हैं ना, दे आर बिजी इन देयर थिंग्स, सो दे डू नॉट स्पेंड दैट मच टाइम विद देयर किड्स. तो उनको कहते हैं अच्छा जी तुम लोग गेम्स खेल लो, चैट कर लो, ये कर लो. तो दिस इज रॉन्ग, राइट? Yeah. They should never do that, because they should be like they should in their mind they should learn what they're saying first. Yeah. They should say in their mind to say, am I doing this right? Yes or Yeah. no? So everything what you do, you should ask yourself, am I doing the right thing? Yeah. So that's very important point from Ishal कि जब भी हम कोई चीज़ ये कर रहे हैं, खास तौर पर ये बच्चे, तो हमें सबसे पहले ये क्वेश्चन करना चाहिए कि am I doing the right thing? Yeah. Right? Because if you keep doing, then it will be easy. Someone can trick you. Yeah, like if you didn't know that if your parents wasn't smart and they didn't know how to make a safe way for you to ride a bike, you would probably fall for a long time, right? Yeah, that's a good example. That's a good example of bike, right? Yeah. And similarly, like we need to make sure our privacy and physical security. Like see, जो ये digital security या cyber security है ना, इसको आप physical security इन दोनों को आप अलग नहीं कर सकते. क्योंकि आप देखें कि ये इंसिडेंट स्टार्ट हुआ एक डिजिटल डिवाइस से, ठीक है, और वहां से जो है ना फिर ये है कि वो एक फिजिकली जो है वो उसको एक इंसिडेंट जो है वो अपीयर हुआ. तो इसका मतलब ये है कि आप ये नहीं है कि भाई आप जो है ना बाहर किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हैं, जैसे आप किसी स्ट्रेंजर से बाहर बात नहीं कर सकते या आपको लगता है कि ये तो बहुत बुरी बात है, तो दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग और सेम सिनेरियो कि जब आप किसी से जो है वो डिजिटली बात करते हैं. Yeah. क्योंकि आपको ये लगता है कि अच्छा जी ये क्या कुछ नहीं है, ये तो मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, तो आप जो है वो अनजाने में जो है वो अनइंटेंशनली इवन जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर देते हैं अपने साथ, अपने पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन, सैलरीज की इन्फॉर्मेशन, आपका घर का एड्रेस. Yeah, right? they can probably be a bad guy and rob your house. Yeah, so that could also be happen. And they could also pretend that they're like one of your dads and like that. Yeah, that's true. तो ये जो सारी चीजें हैं ये प्राइवेसी ब्रीच है. Yeah, right? so sometimes when I'm like when Baba is away and then a bad guy knocks on your door and you open that, you have to say, do you know everything? Sometimes your dad tells you about everything, and then when sometimes your dad tells about how much money you have, like something like that, but not your password. So will you tell your viewers your Baba's salary? No. So a bad guy would be knocking on the door and then he's saying, I'm your Baba, and then you would like ask, do you know how much money you have? And if he says yes, that means he has to tell it out loud, right? But he doesn't know. If he says the wrong thing, he can actually not be. Yeah. So viewers, kids, प्यारे प्यारे बच्चों, ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है. हम ये पॉडकास्ट बना रहे हैं, हम अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं. इशाल जो है वो इसके बारे में पढ़ती है, लर्न करती है, मुझसे डिस्कस करती है, बिकॉज वी वांट टू स्प्रेड द अवेयरनेस कि भाई
हमने अपनी प्राइवेसी को मेक श्योर करना है, और जो पेरेंट्स हैं उनको अपने फ्राइज या उनको अपनी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है, क्योंकि समटाइम्स बच्चों को नहीं पता होता कि व्हाट दे आर डूइंग, राइट? सो इट्स पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल, एंड आई थिंक कि ये बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि बच्चों को भी अब जो काफ़ी चीज़ें पता चलना शुरू हो गई हैं कि व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग, राइट शाल, राइट? Yeah. So that's it, guys. Thank you so much. So Also, please do not say the bad words. yeah, do not see the bad. Do not Yeah, talk bad words. Yeah. Yeah. Awesome. So anything else, Ishal, from your side before we conclude today's podcast? No. Okay. So thank you, guys. अपना ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें. Take care. Allah Hafiz. Bye.